Assalamualaikum. This is my research-based project implementing a tic-tac-toe game I coded using minmax algorithm in order to compare how the output will differ if the program is made with alpha-beta pruning, and without alpha-beta pruning. So to give everyone a little overview how minmax works, पहले तो what the algorithm does is it generates a tree of possible game state where the level of each tree alternates between minimizing and maximizing player. The terminal node then shows the utility value. अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों की जो कोड है टिक-टैक-टो का कोड है उसमें वी आर अज्यूमिंग दैट सिंस इट्स अ एआई वर्सेस प्लेयर कोड वी आर अज्यूमिंग कि अगर हम लोगों का अक्रॉस जीत रहा है तो इट विल रिटर्न वन एज इन एक्स इज द हम लोगों के प्लेयर का साइन। तो अगर हम लोग का प्लेयर जीत रहा है और द पर्सन प्लेइंग इट इज विनिंग देन वी आर रिटर्निंग अ वन। अगर हम लोग का एआई एजेंट जीत रहा है देन वी आर रिटर्निंग अ वैल्यू ऑफ नेगेटिव वन एंड अगर ड्रॉ हो रहा है तो वी आर रिटर्निंग अ जीरो। दिस इज द यूटिलिटी वैल्यू और द स्कोर ऑफ द गेम पर which basically score and utility value are interchangeable terms, they basically mean the same thing. अब हम लोगों अब using DFS basically we have implemented the program to be able to choose the maximum utility value score and then the minimum utility value score. So for reference here is a little code of the here's a little structure of the tree. हम लोगों की जो utility value हम लोगों का program पहले recursively यहाँ तक पहुँचेगा at the terminal nodes and then it will propagate the tree रिकर्सिवली। नेक्स्ट लेवल जो हम लोग की आएगी मिनिमम वैल्यू की जहाँ पे हम लोग का एआई एजेंट विल कंसिडर द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो एंड देन एट द मैक्सिमम लेवल इट विल कंसिडर द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो हम लोग के पास दो लेवल्स होंगे, एक मिनिमाइजर की एक मैक्सिमाइजर की। मिनिमाइजर स्कोर कम करने की कोशिश कर रहा होगा एंड मैक्सिमाइजर स्कोर ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा होगा। So at each non-terminal node, if it's a maximizing plus turn, the maximum value is selected, which is at the top, and if it's a minimum value turn, then it's the minimum value is selected. तो यहाँ पे हम लोग की पहले नेगेटिव वन सेलेक्ट होगी, यहाँ पे जीरो सेलेक्ट होगी। अब इन दोनों में से हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ जीरो होगी, तो मैक्स लेवल पे आकर हम लोग की जीरो वैल्यू सेलेक्ट होगी। अब ये मैंने इंप्लीमेंट कैसे किया है, हम लोगों का जो एआई होगा ना, इट विल स्टिम्युलेट what the player will do next. The player will try to minimize the value. हम लोग मिनिमाइजर है, हम लोग का एआई प्लेयर मैक्सिमाइजर। तो एआई हम लोग का अज्यूम कर रहा है कि हम लोग जो है वर्स्ट वैल्यूज के लिए पिक करेंगे विच विल बी -1, राइट, क्योंकि हम लोग को तो लूज कराना है ना एआई को। तो हम लोग सबसे वर्स्ट वैल्यू इसके पाथ चूज करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए पहले वो इनिशियली मिनिमम वैल्यू यूज करेगा, फिर वो अपने लिए बेस्ट केस सिनेरियो ढूंढेगा कि अगर मैं हारूं भी तो मैं सबसे लीस्ट लाइक मैं सबसे ज्यादा स्कोर से हारूं एटलीस्ट, तो वो वाला पाथ चूज करेगा जो मैक्सिमम स्कोर उसे मैक्सिमम स्कोर आउटपुट दे रहा होगा विच इन दिस केस इज जीरो बिकॉज आउट ऑफ -1 एंड जीरो हम लोगों का बेस्ट स्कोर है जीरो। तो यही वाला पाथ चूज करेगा और यही वाली मूव प्ले करके जीतने की कोशिश करेगा। अब मैंने इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट क्या किया, ये वाला दिस प्रोग्राम इज मिन मैक्स विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब अल्फा बीटा विदाउट अल्फा बीटा, अब जो नॉर्मल फंक्शंस हैं मेरे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फंक्शन प्रिंट बोर्ड जहाँ पे हम लोग अपना बोर्ड प्रिंट करा रहे हैं। बेसिकली तीन रोज प्रिंट हो दो रोज प्रिंट हो रही हैं और दो कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं पूरी कंडीशन के साथ। ये वाला फंक्शन में डेफ चेक विनर में हम लोग सारी कंडीशन विनिंग कंडीशन इनिशियलाइज कर रहे हैं जहाँ से एक प्लेयर विन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कंसेक्यूटिवली 0 1 2 एज इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों के तीन सेम प्लेयर ने डाला हुआ होगा अपना पीस और लाइक पीस डाला हुआ होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ विन। सिमिलरली नेक्स्ट रो में 3 4 5 सेम पोजीशन कंसेक्यूटिवली इसी में एक प्लेयर ने अगर अपनी मूव प्ले की हुई होगी तो इट विल विन एंड सो ऑन। हम लोगों ने मैंने डायगनली भी सारे केसेस कंसिडर किए हुए हैं। अब वी आर यूजिंग अ फॉर लूप टू चेक आइटरेटिवली इन दिस इनिशियलाइज्ड थ्रू दिस इनिशियलाइज्ड एरे कि अगर हम लोगों के ये तीनों आइट्रेशंस या ये तीनों पोजीशन सेम प्लेयर ने ऑक्यूपाई की हुई है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे विच मीन्स दैट देयर इज अ विनर। अदरवाइज वी आर रिटर्निंग फॉल्स, यानी कोई भी विनर नहीं है। हम लोग इसके बाद ही इवेल्युएट बोर्ड वाला फंक्शन कॉल करना विच बेसिकली टेल्स अस व्हाट प्लेयर वॉन। अगर हम लोगों का अगेन हम लोगों की स्टेट्स रिटर्न कर रहा होगा, इफ द स्टेट रिटर्न इज वन इट मीन्स द प्लेयर वॉन, इफ द स्टेट रिटर्न इज -1 दैट मीन्स द एआई एजेंट वॉन एंड इफ देयर इज नो स्टेट रिटर्न दैट मीन्स इट्स अ ड्रॉ। जनरेट मूव बोर्ड इज बेसिकली generating a new board after a player plays a move. What it is doing is it is returning, it is placing the move played by the player, and everything before that one position is the same, everything after that one position is the same. So the new output generated will be the cross with the player's piece or the player's sign placed on the board, if only if we are considering that that position that the player is sending is empty. So for instance, as you can see in the output, if you enter the move 0, if you enter the position 0, it will place your cross at the, it will place your knot at this position, and everything after this position is still the same. Then as the AI makes a move, the same function will be called and the cross will be placed based on what the AI picks, and this and all of the other position will be returned as it is. So yeah, next we have the core logic of the min max algorithm. Okay, this is our min max function.
which is the main part of the game. तो फर्स्ट वे गोना चेक द बेस केस, अगर हम लोगों के पास स्कोर में, अगर हम लोगों की इवेल्युएट बोर्ड वाले ये फंक्शन कोई भी स्कोर रिटर्न कर रही है, वी आर गोना अज्यूम दैट द गेम इज नॉट प्लेबल एनी मोर, आइदर द प्लेयर लॉस्ट, आइदर द प्लेयर वॉन, और आइदर देयर इज अ ड्रॉ। अगर इन तीनों केसेस में हम लोग एज इट इज कोड रिटर्न कर रहे हैं एंड वी आर अनाउंसिंग दैट देयर इज लाइक समवन हैज वॉन और द गेम इज अनप्लेबल, इज नॉट प्लेबल एनी मोर, बट इन अ केस वेयर इट इज रिटर्निंग नन, इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू एट ऑल, इसका मतलब गेम इज स्टिल अनफिनिश्ड। तो इसमें वी आर चेकिंग कि व्हाट लेवल वी आर ऑन। अगर हम लोग मैक्सिमाइजिंग लेवल पर हैं तो हम लोग अपनी मैक्स वैल्यू चूज करने की कोशिश करेंगे एज द यूटिलिटी स्कोर। वी विल फर्स्ट इनिशियलाइज our best value as negative infinity, which is the lowest number in this case, and then using a for condition हम लोग हर मूव कंसिडर करेंगे इन द न्यू स्टेट ऑफ बोर्ड, विद द न्यू स्टेट ऑफ बोर्ड बीइंग के हम लोगों का जनरेट मूव फंक्शन हमें एक नया बोर्ड की स्टेट बनाकर देगा, कंसिडरिंग द प्रीवियस मूव प्लेड बाय द प्लेयर इज कंसिडरिंग द प्रीवियस मूव प्लेड बाय द प्लेयर, और इस हिसाब से द न्यू बोर्ड जनरेटेड विल टेक इनटू कॉन्टेक्स्ट द पोजीशन दैट द, पे हम लोग फॉर लूप से वी आर गोना चेक एवरी पॉसिबल मूव प्लेबल इन द न्यूली जनरेटेड बोर्ड। हम लोग का जनरेट मूव फंक्शन हम लोग को नई स्टेट दे रहा है बाय टेकिंग इनटू कॉन्टेक्स्ट द प्रीवियस मूव प्लेड बाय द यूजर और प्लेयर, वट एवर प्लेयर इट वॉज, AI था या एजेंट, और फिर उस पोजिशन पर वो इस पोजीशन को अनप्लेबल बनाकर वो एक नया बोर्ड जनरेट कर रहा है जहाँ पे इट्स गोना शो अस ऑल ऑफ द अदर पॉसिबल पोजीशन दैट कैन स्टिल बी प्लेड, और जो प्लेबल पोजीशन है हम लोग उनमें अपनी मूव को कंसिडर करते हुए बेस्ट मूव चूज करेंगे, पिक as in the maximum value since it is a maximizing level of the tree, since it's a maximizing uh, iterate maximizing iteration। हम लोग इसमें अपनी पुरानी बेस्ट की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू बढ़े या द नेक्स्ट वैल्यू दैट आर मिन मैक्स फंक्शन विल रिटर्न, और फिर हम लोग मिन मैक्स फंक्शन में हम लोग करंट वैल्यू डाल रहे हैं, डेप्थ का लोअर लेवल लाइक द लेवल बिलो दैट लेवल डाल रहे हैं इन द ट्री, एंड वी आर passing another argument as false, which is basically the is maximizing argument, because like I said previously min max algorithm में क्या हो रहा होता है कि हर ट्री का जो लेवल होती है वो आइटरेटिवली पहले तो मिनिमम वैल्यू यूज चूज कर रहा होता है फिर मैक्सिमम एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग की करंट बूलियन वैल्यू इज मैक्सिमाइजिंग की ट्रू है तो दैट मीन इट्स सेफ टू अज्यूम कि नेक्स्ट वैल्यू हम लोग की फॉल्स होगी, एज इन द ट्री विल बी इन मिनिमाइजिंग स्टेट। हम लोग नेक्स्ट डेप्थ कंसिडर कर रहे हैं ट्री की और फिर हम लोग अपनी करंट मूव भेज रहे हैं एज इन द करंट मूव, एज इन कौन सा प्लेयर हम लोगों का मूव प्ले कर रहा है, और फिर हम लोग वैल्यू एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं इन केस ऑफ इट नॉट बीइंग अ मैक्सिमाइजिंग वैल्यू यानी मिनिमाइजिंग वैल्यू है। हम लोग अपनी बेस्ट को इनिशियलाइज करना है एज इन्फिनिटी रादर देन नेगेटिव इन्फिनिटी, फिर इनिशियलाइजिंग इट एज द बिगेस्ट नंबर क्योंकि हम लोग को सबसे छोटा यूटिलिटी वैल्यू चाहिए, आर प्लेयर इज ट्राइंग टू लोअर द स्कोर इन दिस केस। अब हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं फॉर लूप से, हम लोग देख रहे हैं कि प्लेबल वैल्यूज कौन सी हैं और उसमें हम लोग को सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना है, एंड वी आर कंसिडरिंग द बेस्ट द स्कोर्ड वैल्यू इन दिस वेरिएबल, and recursively we are calling the min max function again, passing our current player's move as in what position it played on and the depth of the tree, the next level of the tree, and true क्योंकि minimizing के बाद alternatively हमारे पास maximizing वाला tree maximizing वाली level आएगी and so on। Now we are implementing our AI agent in this function। First we're going to start a timer which is basically checking how fast the AI is making a decision depending on what algorithm it's running, comparison. First, the best move value stores the index 0 to 8 of the best move. Well, what? Okay, so the best value keeps track of the best score found so far, and the best move is initialized to -1 as in it is not a place on the board currently. We're looping through each cell of the board. We check if the cell is empty, and then temporarily our AI agent will place an X at that position to simulate the move, and then it will call the min-max function to evaluate that simulated move it played. The depth is 0 since we are starting off, but since it is a recursive function, the depth will continue increasing until an optimal value is found, and that value or utility value is returned as the move value. Then our AI agent will undo the move, restore the original state of the board, and if the move value is better than the best value we've seen so far, then it will be saved as the best value and the move will be saved as the position that our AI agent has played. The min max function parameters as the state of the board. We're sending 0 as the initial value of the depth because this is the initial state, as in our AI agent is just starting off, and we are sending false because we are considering our AI agent to be the maximizing player. The next move will be of the human or the player that is playing against the AI, which will always be negative or minimizing in this case. And last but not the least, this is the play
main function of the game. We are basically iterating between the player and the AI agent. We're asking for input. If that place is empty, the player gets to make a move. If that place is not empty, it generates a prompt telling the player that that is not a valid move. Then we print the board at every turn to check the state of the board. Here is an example. At every turn, the state of the board is printed with a new move or the new move of the player of the new move implemented, the new move placed at that position. Then at every move we check if there is a winner. If there is, we break the loop and the final score is decided. If there is no win, if uh, then the while loop, then the game loop is broken. If the crosses won, we print that AI won. If nobody won, we print that it is a draw, as in the return value is nothing. So to simulate the game, here is an example. First, we make a move. Let's say I want to play at position 0. Then our AI will make a move, and you can see that the time is displayed here. How long it takes for the AI to make the move using min-max algorithm. Then we play another move. Let's say 2. The AI makes another move. Then since I don't want it to win, we can make another move at 7. Oh, oopsie, oopsie. Okay, again, I'm sorry, I broke my program. We played a move at 0, AI played the middle move, and if you've played TicTacToe before, you should know that this is the best move a player can play. Then we have, then if we play a move at 2, let's say, our AI is trying to go for the win, it's trying to pick the best move. Then we pick 7 because we don't want it to win. It picks the next best move, which is 3 in a row again. We're gonna let it win now. Oh, invalid move because that's already taken, I meant to say. And look, it took 0 seconds at the end for the AI to make a choice because it decided to win. Next is for comparison is our min-max algorithm implemented through alpha beta pruning. So to start off, the concept of alpha beta pruning is that it is an optimization of the min-max algorithm. Instead of evaluating all possible moves, it cuts off branches that can't possibly influence the final decision, hence speeding up the decision making without changing the result. So here's a reference picture. I showed it earlier before. If the minimizer finds a move that is worse than the alpha, the maximizer will never allow that move. If the maximizer finds a move that's better than the beta, it stops looping. So we start at the beginning, at the root node, and we go down recursively. Min max. It picks the maximum value. Our 5 value gets propagated here. Then it picks the maximum value. Our value 9 gets propagated here. Over here, our tree will check the minimum value. Since we know this will produce the minimum value, as we are assuming that 5 is the most value, is the highest value in this tree, we automatically cut this part of the tree and we don't bother checking it, which saves us a lot of overhead. Our AI agent will go for this part of the tree only. So how did I implement this? Every function is the same. We print a board, we check for winners using the initialize condition, and we check if the consecutively the move on that position is played by the same player. Then we evaluate based on the states we have decided. If it's 1, then the player won. If it is -1, then the AI won. If it's 0, then nobody won. Then we generate moves, the newer state of the board. How do we do it? The current move, उससे पहले जो भी हमारी moves हैं, it stays the same. उसके बाद जो भी हमारी moves हैं, they stay the same. Only in the case where that position is empty. Then our alpha beta function, the core logic function, is implemented here. उसके बाद भी we have AI move. उसके बाद भी we have the same function AI move where we're implementing our agent. All of the logic is the same. Only this part of the program is different where we're implementing the AI agent. Where we're implementing the alpha beta pruning, which is used to optimize the min-max algorithm. Now additionally it's taking two more parameters, alpha beta. Alpha is for the minimum value and beta is for the maximum value, and it's checking कि उस level पर हम लोग की maximizing state है या minimizing. Base case हम लोगों का check हो रहा है कि अगर हम लोग का कोई विनर आ रहा है तो हम लोग वही स्कोर रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग चेक कर रहे हैं कि फिर ऑन द मैक्सिमाइजिंग लेवल, और हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं दैट वैल्यू विद द बेस्ट वैल्यू. हम देन यूजिंग द फॉर मूव then using the for loop, we're checking in the newer state of the board. We're simulating the AI's move using the X mark, and uh, using the X mark. Okay, so we're simulating the AI's turn by sending the AI's in the alpha beta function. We're using alpha beta pruning to alpha beta method to optimize min max function. We are sending the board state, the depth, to additional variables alpha and beta, and checking whether the level is maximizing or minimizing.
In the base cases, we're checking if any player has won. If the value returned is not none, that means if the state is either one, if the value returned is either of these, it means the game is not playable anymore. This base case is similar to the base case mentioned in the previous algorithm without alpha beta pruning. Then we check if the level is maximizing or if the player is trying to maximize its utility score. We update the alpha or the max value to store the best value. We initialize the maximum value to negative infinity because we're looking at the highest possible score. The idea is that if we find the better move, we will replace this value with the better move because every other move will be better than infinity initially, right? Then we are generating all the possible moves that can be played on the board after the uh, previous player or after our AI is done picking a move, after we have simulated our AI to pick a move. We pick the best, we pick one of the moves, or we check for every move playable in that state of the board. Recursively, we evaluate the next move from the opponent's perspective. We send the parameters move, the current move we're playing, the next level, the variable alpha, beta, and the value they store, and we return false because the alternative level will not be the maximizing function anymore, it will be minimizing. We increase the depth to reflect that we're moving one step deeper in the decision tree. We update the best score the AI can achieve so far. Maximum, we update the max evaluation, max eval, which basically store the maximum score after we are done. um, After this we have evaluated the best possible move recursively. We update the best score that can be achieved so far out of the previous score stored versus the value we get after we get the after the utility value is returned after we recursively call the alpha beta function. Then we update the alpha value with the best score that we can get. This is important because if beta is lesser equals to alpha, the opponent or the AI will never let us reach this branch. It will be pruned. So in order to lower the overhead or lower the um, checking of irrelevant branches, we prune the value which is lower and we store the maximum value in alpha. We break the loop. We check if the alpha value is greater than beta. We compare the values with beta. If it is lesser, then we break the branch and we don't check it further. If it is not, then we continue with our iteration for the next move on the board. But if the beta is lesser than alpha, then we break and we return the maximum value. Then we, for the else block, considering if the level isn't maximizing, we initialize minimum value to negative infinity. The opponents want to minimize the score, the AI score, so we try all possible moves that are playable, that are empty, right? Generate, and it is the state of the board is provided by the generated move function as specified before. Then we try all of the possible moves in that in the new state of board. We recursively evaluate from the AI's perspective by simulating it as true. We are considering the next level will be maximizing or the next turn of AI will be maximizing. We update the lowest score the opponent can force by तो फिर हम लोग we store the we use the evaluate function to get the lowest score lower recursively checking every level. Then at the evaluate function we evaluate the current position. We check if it is we check iteratively till the terminal node. We send the parameters move the next depth. Basically we're simulating the AI's move in this level at this stage. We are sending the alpha beta value and we're considering that the next state will be true and that the next level is minimizing the function and the next is minimizing the utility value. Then we are updating the lowest score the opponent can force. We check which one is the minimum value, the value already stored in minimum, the lowest minimum evaluated value, or the current value we evaluated, we recursively got when we call this function. Then we update the beta value, the best value the minimizing player can guarantee by checking if the current beta value is smaller than the value we evaluated. If beta is lesser than alpha, we break and we do not consider that part of the branch anymore. We don't consider checking that part of the branch anymore. However, if the beta is greater, we return the minimum value. Then we call the main function, which is still the same as before. Now to check our program, we put in the same
input we did for the older program to compare fairly. The next move we made was 2, so we're gonna make the next move as 2 again. And as you can see, the time taken is relatively lower. It's 0.0176 for the first move we made. Over here it was 172. It was 0.0 in the second one in alpha beta pruning, but it was zero point 0.1 in the one without alpha beta pruning. Then in the second one you can see it took 0.0031 seconds. However, over here it took 0.002, and therefore, as you can tell, that alpha beta pruning is more efficient, faster, produces the same result, and always produces the same result as when exhaustively iterating through the whole tree, as it produces the same result as the program would using minmax, exhaustively iterating throughout the tree. So we can play the whole game for further proof that the AI produces the same results. And look, it still won. There is no difference in the moves it made. It's just it took lesser time to make those moves, since it didn't have to evaluate the pruned trees anymore, and the tree structure was relatively lower. And it did because it didn't have to evaluate the pruned branches anymore. Therefore, the overhead was lower, and the time it took to make a decision was faster.